तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 का डी पार्ट। अगेन अनदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेलिजेंस। अब कौन से फैक्टर्स इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं ये हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं और फिर उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो इस इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले डेफिनेशन की तरफ। Intelligence is a complex and multifaceted construct that is influenced by a combination of genetic, environmental, socio-cultural factors. Understanding the factors affecting the intelligence is essential for appreciating nuanced nature of human cognitive abilities. Here are some key factors that play a key role in determining the इंटेलिजेंस। तो अब हम उन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं जो इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जो किसी को इंटेलिजेंट बना सकते हैं या किसी की इंटेलिजेंस को कम कर सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो इस सिलसिले में पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। उसके किसी पर्सन के जीन्स जो है वो की रोल प्ले करते हैं उसके इंटेलिजेंस के अंदर। जेनेटिक फैक्टर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इंटेलिजेंस। Studies of twins and family members have shown that intelligence has heritability component, meaning that a portion of intelligence is determined by genetic inheritance. However, it is important to note that the genetics is not the sole determinant of intelligence, and environmental factors also play the crucial role in the intelligence. तो अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। स्टूडेंट्स पहला फैक्टर हमारा था जेनेटिक्स, हमने जेनेटिक्स की बात की। अब सेकंड हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में environmental factors have a substantial impact on the development of intelligence. Early childhood experience, nutrition, access to quality education, exposure to stimulating environment, socio-economic conditions all contribute to person's cognitive development. A stimulating and supporting environment can enhance the cognitive abilities, while deprived and neglectful environment may hinder the intellectual growth. स्टूडेंट्स हमने environmental factors में बात की है कि उसकी न्यूट्रिशन, उसकी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, न्यूट्रिशन। तो इसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं कि उसके एनवायरनमेंट में उसका किस तरह की एजुकेशन उसको अर्ली चाइल्डहुड में या उसके ग्रोन एज में उसको अवेलेबल थी, तो वो भी एक रोल प्ले करती है। एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द इंटेलिजेंस। फॉर्मल डेफिनेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल with the knowledge skills and opportunities to develop their cognitive abilities. A good education system with skilled teachers and adequate resources can positively influence the intelligence level in the population. तो ये हमारे पास एजुकेशन एक एनवायरमेंटल फैक्टर था। सेकंड हम न्यूट्रिशन की अब हम बात करते हैं कि जिस तरह एजुकेशन जो है उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मेन रोल प्ले करती है, इसी तरह से उसकी न्यूट्रिशन और हेल्थ जो है ये भी की रोल प्ले करती है। Adequate nutrition during the critical development periods such as infancy, early childhood is crucial for optimal brain development. Malnutrition or health issues that affect brain function can have long-term consequences on cognitive abilities. तो अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन उसकी पूरी नहीं हुई है, तो ये भी उसके इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर सकती है और उसके इंटेलिजेंस को कम कर सकती है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, SES। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस प्ले अ रोल इन इंटेलिजेंस। चिल्ड्रन फ्रॉम हायर SES backgrounds often have more resources, better access to education, and exposure to enriching experiences, which can positively impact the cognitive development. Conversely, children from the lower SES, lower socioeconomic status backgrounds may face disadvantages that could hinder their cognitive growth.
नेक्स्ट फैक्टर है पेरेंटल इन्फ्लुएंस। तो जो पेरेंट्स हैं किसी भी बच्चे के, वो भी बहुत की रोल प्ले करते हैं उसके इंटेलिजेंस के अंदर। द स्पोर्ट एंड सिमुलेशन The support and stimulation provided by parents and caregivers during the early childhood play a significant role in shaping intelligence. Engaging in activities that promote cognitive development, such as reading, problem-solving games, interactive conversations, can have positive effect on the children's intelligence. Next are cultural factors. Cultural influence can affect the development and expression of intelligence. ये थर्ड फैक्टर था। फर्स्ट वन था हमारे पास जेनेटिक, सेकंड था एनवायरनमेंट, और थर्ड है कल्चरल फैक्टर्स। अब कल्चरल फैक्टर्स, different cultural values, different types of intelligence, and prioritize certain cognitive skills over others. This can lead to variation in how intelligence is assessed and perceived across the culture. Exposure to enriching activities. Exposure to intellectually stimulating activities such as arts, music, sports, and challenging puzzles can enhance cognitive abilities and foster the creative and problem-solving skills. Last factor, neurological factors. Brain structure and function play a crucial role in intelligence. Individual differences in brain organizations, neural connectivity, and neurotransmitter activity can impact cognitive abilities. तो ये कुछ फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स जो कि किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. It is essential to recognize that intelligence is a complex and multifaceted construct and no single factor can fully explain its development. Instead, intelligence arises from the interplay of genetic, environmental, socio-cultural influences. Additionally, intelligence is not a fixed trait and can be influenced by various factors throughout an individual's lifespan. तो ये उसके फिक्स नहीं है कि अगर कोई बचपन में तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो अपनी पूरी लाइफ में इंटेलिजेंट रहेगा, तो बाद में आने वाले वाक़यात भी उसकी इंटेलिजेंस को इफेक्ट कर सकती हैं और उसकी इंटेलिजेंस को कम कर सकते हैं या उसकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं अगर अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है. तो ये था क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट, डी पार्ट. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो गया.